There's one more small addition to the whole thing, facts and figures that she told you is, after my daughter Ghulam, I have a son who also is into IIT Chennai. He also got the age of 50 years old. I have one more daughter waiting for me. She's preparing for her IIT. So may God bless her and wishes of all of you that she also should get into IIT. I don't know how apt it is. All of you belong to teacher trainings, I believe, right? Yes. Is it BEd or MA? Or both? Both. A very accidental meeting for me and all of you because I brought up my children at home and they never went to schools. Yeah, that's what exactly she laid it out, but then I would want to tell it in a more slower passion, the way I would want to tell it to you. They never went to schools and the first time ever they opened up and went to one of the gates of IIT. And with that, probably I'm certified and qualified to stand in front of you because I'm already mother and teacher of 3 children. Now, what did I teach? Did I teach maths? Did I teach physics? Did I teach chemistry? No. I probably taught them what to learn, how to learn. That's the biggest beauty when a woman turns to be a teacher. The first thing I want to tell all of you is that women is blessed if she takes up the role of a teacher, because she's a teacher already. A mother is a born teacher. The child first learns everything from the lap of a woman. Whether it is a religious thought, whether it is social teaching, whether it is moral teaching, whether it is respecting elders, whether it is respecting father. I'm very specific on this note, whether it is respecting father, whether respecting your brothers. At the same time, I would say that if a boy has to learn how to respect women, the boy has to learn how to respect his own sisters, the boy has to learn how to respect his wife. It is also taught by me. So the beauty is, we are born teachers. And with that, if you have chosen the profession to be a teacher, probably you have done the right thing. No child is born dumb. हर बच्चा इंटेलिजेंट बनता है, हर बच्चे में काबिलियत होती है, हर बच्चा एक आटे के जैसा होता है, वो गोद देने वाले के हाथ में रहता है। जो लगन से करते हैं तो उनके यहाँ फुल्का खुल जाता है, जो लगन से नहीं करते तो फुल्का नहीं होता है। हम बस आटे कैसे सिखाइए उन अम्मियों को और उनकी जो कैसा खोखला और फुल्का को कैसा फुलाना, बच्चा को कब पता है वो किसके साथ। And she taught me this when she was 15. She taught me this when she was 15. My children are my gurus. That's how they made me a mother. Because the first time I had to learn in 20 years, बड़ी कभी 20 साल में और एमटेक, ये साल में एमटेक आ जाएगा उसको IIT चेन्नई से भी चेक क्या वो जितना भी समझाती है फिर भी I'm very proud mother. इनका नाम लिए बिना जिक्र करे बिना मेरे को कदम आगे भी नहीं बढ़ता है because they are my examples, they are my achievements, they are my products. But what is very important at the end of the day is what we have to inculcate in a student is very important. एक माँ को जितनी सहन शक्ति चाहिए उससे ज़्यादा एक टीचर को चाहिए. We always try and we all undergone this. हम स्कूल में सब स्कूल में पढ़ चुके हैं. Very rare that children like me are brought up because I expect it. हम सब लोग के तजुर्बे हैं कि अक्सर क्लास में पहले बेंच का एक किस्म का ट्रीटमेंट होता है, आखिरी बेंच के बच्चों को दूसरे किस्म का ट्रीटमेंट होता है. लेकिन कोई बच्चा आखिरी बेंच में क्यों बैठता है? Whose failure is this? Is it the students or the teachers? If we can question this to our own sense, then probably no child would want to sit with the back bench. I've been teaching for more than 35 years in my life. आप पूछेंगे कैसे? When I was studying 9th, I was already a teacher in my house. हमारे खुद के स्कूल के बच्चों को पढ़ाते थे फ्री में, और मेरे सारे टीचर्स डरते थे क्योंकि वापस जाके मुझसे सवाल करती थी. मैं 9वीं कक्षा में थी और उनको वापस जाकर सवाल करती थी. 6 या 7वीं कक्षा के बच्चे करते थे, दीदी दीदी बुलाते थे.
वहाँ से लेकर मैं till I was graduate, I was teaching my own school children, and my principal at graduation level, when I was already a graduate, he used to call me to take demo classes for teachers. एक बच्चा जब बैक बेंच में बैठता है, बड़ी तकलीफ से बैठता है, खुशी से नहीं बैठता है। किसको पता है उसको क्या प्रॉब्लम है? किसी को साइट का प्रॉब्लम हो सकता है, किसी को सुनने का प्रॉब्लम हो सकता है, किसी को समझने की प्रॉब्लम हो सकती है, या किसी को कंसंट्रेशन नहीं होता, या किसी को भूख हो सकती है, या किसी को सुबह मार भी खा के आया हो, या किसी नहीं खा के। Is it only we have emotions? Is it only we have only happiness in life? It is only we have mood in life. Even children have, they are more egoistic than us. अब छोटे बच्चों को देखिए, घर में अगर कहीं देखा है कि बच्चे को बच्चे किसी भी बच्चे को देखिए, क्या स्मॉल किड्स एट होम, they can smile very fast. तो छोटे-छोटे बच्चों के कैसे होते हैं, बच्चों के कैसे होते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा। हाँ, it is also true that they come back to you very fast. इस तरीके से बच्चों को परवरदिगार से तुलना किया जाता है, भगवान से तुलना किया जाता है, because they also forget so easily. But how many times a kid takes insult and humiliation, that much their brain starts altering. There's something called brain altering. Brain altering happens the kind of influences in an ecosystem they are trained in. अगर एक बच्चा नेगेटिव इकोसिस्टम में ट्रेन होते रहता है, जिससे वो पैदा हुआ है, वो बदल जाता है। हम अक्सर समझते हैं, we often think that we're actually doing a wonderful job being a teacher, but we all forget that they're existing and surviving because of the fees paid by students. वो हमारे अन्नदाता हैं, they are customers. But this doesn't call for the customers to be bad. ये आपके लिए वो छोटे कॉलेज के बच्चों को समझना चाहिए, जो आपको उम्र में आ जाते हैं तो आपको गुरु का you need to be very respectful to your teachers, क्योंकि अब तक आप सीख जाना चाहिए, क्योंकि आप किसी के गुरु बनने वाले हैं। कहाँ से आएगा? Tell me now, you go with this mind frame. You are making it a vicious cycle. स्कूल से फिर टीचर से आपका शिकायत होती है, वो टीचर से शिकायत होती है, पेरेंट्स से शिकायत होती है। अरे पेरेंट्स आगे बच्चों के ऊपर जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, टीचर भी और प्रिंसिपल को नहीं बताएंगे तो किसको जाके बताएंगे वो लोग? क्योंकि वो would they go and tell the atrocities of their children? So इसका मतलब ये है कि बच्चा जब घर जाता है और उसका प्रॉब्लम्स पेरेंट्स से समझाता है, so would we expect that the parents will tell children that बोलके दो मार के क्या टीचर के ऊपर बोल रहा है? क्या ये उम्मीद करते हैं पेरेंट्स से? तो हम अगर पेरेंट है तो क्या ये कर पाएंगे? टीचर का भी गलती हो सकती है, टीचर सही है, दो मारे तो आपके अच्छे हैं कि मारे उनके दो। अब आप बताइए, इस किस्म का एटीट्यूड से हम घर से निकल गए तो बच्चे के अच्छे नहीं मार रहे होंगे हम। कभी-कभी अपना गुस्सा निकालने के लिए मार रहे होंगे हम, और मारेंगे आगे जाके। प्रिंसिपल के कमरे में जाएंगे, प्रिंसिपल 2-3 डांटेंगे, फिर वापस आएंगे तो किसके ऊपर दिखाएंगे? घर के बच्चे तो अभी दिख नहीं रहे, वो तो शाम में दिखी, तो ऊपर में जब उनके पास उनके ऊपर दिखा दिया घर जाने के बाद, तब तक तो बच्चा चाहिए ना तो मारने के लिए, इनके ऊपर दिखा दिया। I'm only showing the dark side of it because अच्छे बातें बताने की जरूरत ही नहीं है। कहीं लोग अगर आप बहुत अच्छे टीचर हैं, अच्छे पढ़ा ले रहे हैं, it is okay. I don't have to teach you those things. I'm only showing where is the industry of teaching professionals failing today. Why I have not sent my children to school? 20 साल में हाथ उठाने दूर की बात है, मैं अपने गला आवाज तक नहीं बढ़ाई मेरे बच्चों के ऊपर, 3 बच्चों को। Why am I saying this? Like in Hinduism, we believe that a girl child is goddess. है ना, हम लोग जाते हैं मंदिर में जाते हैं, दुर्गा माँ का पूजा करते हैं। घर पे बेटी को दुर्गा माँ नहीं बनाऊंगी, मैं क्या खाक बनाऊंगी? मंदिर के दुर्गा माँ को दुर्गा माँ बनाऊंगी। पहली देवी तो मेरे घर की बेटी है, नाम तो मैं भगवान का रखती हूँ उसको। अब डांटने देती हूँ इसको, तो किसको डांटूंगी? इसको क्या बताऊँ, किसको डांटूंगी? भगवान के ऊपर मुझे श्रद्धा नहीं है तो मैं चलेगा, मेरे बच्चों के प्रति प्यार तो लेना चाहिए ना। आप टीचर हैं, you are a doctor for a child's life. You are not just a teacher.
You're playing a parental role in the half of his life. एक स्टूडेंट की आधी जिंदगी में आप माँ और बाप बन के जा रहे हो उनके सामने। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसका मतलब है गुरु ब्रह्मा साक्षात होता है, अल्लाह खुदा होता है गुरु। It's very important for all the teachers to understand psychology of a child. Child psychology आपको पढ़ना पड़ता है, ऊपर से उन लोगों का adolescent age होता है। You know what's adolescent age? You need to read what is adolescent age. क्या होता है इस वक्त में? लड़कों को क्या तकलीफें होती है, लड़कियों को क्या तकलीफें होती है? You create dynamic children and students. You are the powerhouses. That's women empowerment. God has made women empowered in this nation on the earth. So the very woman, she creates one more life. कल वही बता दी कि हमारे अस्पताल में वुमेन एम्पावरमेंट नहीं का वुमेन एम्पावरमेंट अंग्रेज लोग के लिए, हमारे लिए नहीं है। दिन साल में ये एक बार पहचाना चाहते हो। So you should be able to convince. No power, no authority. It's only freedom of expression. That's how first freedom of expression started in my house. And from that day till day, my children pick my mistakes and I pick their mistakes with only love and affection. गलती है, आवाज उठा के नहीं बोलेंगे अब गलती है, बेटा ये गलत कर रहा, तो पूछेंगे कैसे करें? Then I have to explain. जब तक opponent, whether it is a teacher, whether it is a father, whether it is mother, whether it is student, whether it is child, उनका गलती अगर उनको समझ में नहीं आ रहा है तो क्या फायदा है? गलती उठाना बड़ी बात नहीं है, गलती उनके समझ में आए तो समझाना इम्पोर्टेंट है। और डांटने से, फटकारने से, मारने से समझ में नहीं आता, ब्रेक बंद हो जाता है। तभी ये खुलता है जब आप प्यार से बिताकर, इसीलिए देखिए अम्मी जब भी गुस्सा करके खाना खिलाती है तो बच्चे उल्टी कर लेते हैं, यहाँ चोक हो जाते हैं। बट वही अम्मी प्यार से गोदी में लेकर कहानियां समझाकर, ये बोलकर वो बोलकर, ये बोलते ना, मेनी ऑफ योर मदर्स उनसे एक घंटा बातें करते खिलाना पड़ता है, इसको जिंदगी हो जाए इसको खाना खिलाने बोलते हैं ना। इसका मतलब है कि the brain that is not accepting the food, it starts accepting just because she's talking to him or her, because he's showing love. Slowly the brain the esophagus starts opening and brain starts accepting the food. Education is also like that. We should make the brain open and accept for education of a child. इसे प्यार से ही किया जाता है। इतना आज आप बच्चा इधर आया, कुरान पढ़ा, इसका मतलब क्या है? वो क्यों पढ़ रहा था वो यहाँ पे? ये इंसान बनाता है बच्चा। मजहब का शक्ति ये होता है, जैसे पढ़ाई उसको ज्ञान देता है बाहर जाके पैसे कमाने का या कुछ तरक्की करने का, माँ का प्यार उसको कुछ भी आगे लेके जाने का शक्ति देता है। मजहब उसको इंसान बनाता है, वो सरहद दिखाता है जिसको उसको पार नहीं करना चाहिए। और कभी हम इस्तेमाल ही नहीं करें मजहब का शक्ति, इससे इंसान नरम बनता है। अकबर साहब क्यों नरम थे, क्यों औरंगजेब नहीं थे? क्योंकि अकबर शाह समझ गए थे मजहब क्या सिखाता है इंसान को। इसीलिए उन्होंने हर एक को प्यार करना सीखे, प्यार बांटना चाहे। मजहब वो चीज है जो इंसान को तलवार से कलम बनाता है। जन्म देना तो कोई बड़ी बात नहीं मेरे हिसाब से, जन्म देने के बाद उनको प्यार देना सबसे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा प्यार दिया बच्चा जब माँ का गोद से और मजहब की शक्ति से बाहर निकलता है, वो स्कूल में अव्वल आता है। यहाँ अव्वल नहीं आए तो उसको कोई फर्क नहीं, क्योंकि उसको पता है उसको पढ़ाई से क्या मिलना चाहिए वो लेने की कोशिश करता है। माजा का बॉटल लेता फटाफट पीना बड़ी बात नहीं है, आराम से माजा पीना है, मजेदार की बात। एक टेक्स्ट बुक का लेसन मजेदार से माजा के जैसा आराम से लेना चाहिए। स्टूडेंट जल्दी पढ़ लिए कोई फायदा नहीं, इतना स्पीड से पढ़ लिए फायदा।
पढ़े लेकिन दिमाग में नहीं गया, अच्छे स्टाइल से बात करें। We like students who put up artificial accents. Good morning, teacher. Good morning, teacher. It's very important how you make up your personality. Teachers को वैसे follow करते हैं बच्चे. Do you know kids when come back home they behave like teacher? They write on the boards like teacher. Yes, that's very important. Very, very, very important. अगर आप में से कोई लिटरेचर टीचर्स हैं, make the student recite the poems. It's so interesting. हमारे टीचर्स वो करते थे पुराने जमाने में, हिंदी हो या तेलुगु हो, पहले दिन बता देते थे tomorrow is this class, सारे बच्चे तैयार हो जाओ. So they never used to tell the poem. स्टूडेंट को रिसाइट करना पड़ता, तब जाके he used to explain or she used to explain the poem. Interactive sessions होते थे. आज कहाँ है interactive sessions? There are no interactive sessions. We become mechanical. हम मशीन तरह से हो गया जिंदगी. भागो 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 भागो. ऊपर से ये गंदे गंदे वेब सीरीज जो निकल के आ रहे. मोबाइल. Very bad. You people have to teach children how to use mobile for good cause. Inculcate that in them. आप उसके लिए कोई मोबाइल से निकाल के कैसा ये 10 चीजें इस चैप्टर के ऊपर कोई बच्चा कर सकता है होमवर्क आप लोग करके. You have to teach them how to even type in the Google search engine. है ना? कर सकते हैं ना? Let them draw in the book. This is a Google status bar. उसके अंदर आप बोलेंगे, for example, you know, like athletics के बारे में. First Indian female runner. Let them type that. Like that they will understand. इसके बारे में जो भी लिखते हैं next day कितना ₹1 का चॉकलेट लेके आके दीजिए आप. लेकिन ₹1 से कुछ फर्क नहीं पड़ता हम लोगों को. लेकिन अब चॉकलेट क्लास में लिया उससे फर्क पड़ता. It is your upbringing which will make your child stand strong. अगर आपके खून पे आपको भरोसा है, आपके परवरिश पे आपको भरोसा है, अगर आपका परवरिश सही रास्ते पे गया होगा, तो आप वो जाके बाहर से फिर बाहर जाएगी, पढ़ाई करेगी, लड़का पढ़ाई करेगा, नौकरी भी करेंगे, घर भी वापस आएंगे. अगर उनको कोई दर्द होता है, वो गलत हो रहा है दिमाग में, बोलने का मौका कहाँ दे रहे हैं आप अपने बच्चों को? You should give the freedom for the child to let out. Who is their guide? If you give fear in them, if you give fear in the student, अरे मैं जाके पूछूंगी तो टीचर बोलेगी, मुझे तेरे को इतना भी समझ में नहीं आता, तो आगे तो पूछेगा तो कब से? Eventually, you know what students say? आप कोई डाउट नहीं पूछेंगे तो आप ग्रेट है. No, तो जितने ज़्यादा डाउट्स पूछते हैं, वो ज़्यादा सुन रहा है क्लास. Doubt means concentration. Doubt means they are wanting to analyze a subject where there are no doubt. जहाँ लड़ाई नहीं है मियाँ बीवी के बीच में, प्यार नहीं है, बहुत शांति है, इसका मतलब कभी टूटने वाला है. वो स्टूडेंट जो डाउट्स नहीं पूछता, इसका मतलब है मैं सो रहा है क्लास में, या नहीं तो डाउट पूछना नहीं चाहता, रट्टी मार के मार्क्स लाने का तरीका समझ लिया है. Let students ask questions. If nobody asking questions, stop the class. You ask questions to them. Randomly ask questions. So please guide your parents of the students to send them fulka in afternoon, not white rice. रात को लेना चाहिए white rice ताकि बच्चा आराम से आपके क्लास में ना सोए. Ask them to send lot of vegetables, खीरा, आराम से पहले खाई नहीं जाना, काला नमक, आदत करवाइए बच्चों को. That keeps your afternoon class. जिस टीचर का भी afternoon class है, स्टूडेंट अवेक रहता है, क्योंकि वो टैंजी जब जाता है जीभ के ऊपर, तब जब टैंजीनेस जाता है, सॉल्ट जाता है, तो अवेक, you sit like this. They don't feel like sleeping because the whole brain gets up.
You need to shake the brain. कौन करता है ये सब करके? ओ ये आप इतने सुने तो भी पता नहीं आप करेंगे नहीं करेंगे मेरा जिम्मेदारी है आपको मैं समझा है my responsibility है to make you people understand and listen to this. Understand girl child in a class. If they have menstrual cycles, understand their problem. They'll be very delicate at that time. Feel like crying. They may not be monetary strong to equip themselves. If you are a good teacher, carry one sanitary napkin in your bag for the student. यहाँ से आना चाहिए तब यहाँ पे आइडियाज आएंगे एंड प्लीज इफ पॉसिबल जितने स्कूल्स में भी आप पढ़ा रहे हो सॉरी और स्पेशली वर्किंग फॉर लो मिडिल क्लास स्कूल्स और गवर्नमेंट स्कूल्स मेरा नंबर आपके पास रख लीजिए साल में एक बार बच्चों को फ्री टेस्ट करवाएंगे हम लोग उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस बच्चा माल न्यूट्रिशन है नहीं है I will work for you teachers if you work for children and that is my promise on this day. Let's empower women and empower women child.